हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का ये 5वां वीडियो हम लोग कर रहे हैं। सो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्ट क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज viewed बाय अ प्रोग्रामर। ठीक है, एक प्रोग्रामर के रूप में कंप्यूटर का फंक्शनल बिहेवियर कैसे देख सकता है एक प्रोग्रामर, उसके बारे में ये है। ठीक है, उसके आर्किटेक्ट के बारे में है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट that housed electronic components. The first computer architecture was introduced in 1970 by John von Neumann। ठीक है, पहला आर्किटेक्ट जो हुआ कंप्यूटर का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, जॉन वन न्यूमैन ने। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्ट कुछ इस तरह है कि पहला ये इनपुट है, इनपुट यूनिट है, सम इनपुट यूनिट। ठीक है, ये गया हमारे पास किस में, ये गया हमारे पास इस पूरे यूनिट में। इसको क्या बोलते हैं, एक सीपीयू यूनिट है। उस सीपीयू यूनिट में क्या है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, फिर प्राइमरी मेमोरी यूनिट है, और फिर वहाँ से निकल के सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, और डायरेक्ट आउटपुट यूनिट है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या है, कंट्रोल फ्लो है, और ये डायरेक्ट लाइन जो है वो डाटा फ्लो है। तो कंट्रोल फ्लो क्या हो रहा है, कंट्रोल फ्लो पहले सीपीयू में जा रहा है। ठीक है, सीपीयू में किस में जा रहा है, पहले कंट्रोल यूनिट में जा रहा है। ठीक है, और डाटा फ्लो किस में हो रहा है, पहले इनपुट से सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू में जाने के बाद किस में जा रहा है, सबसे पहले जा रहा है वो प्राइमरी मेमोरी यूनिट में जा रहा है, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जा रहा है। अरिथमेटिक लॉजिक से कुछ आउटकम निकल के वापस प्राइमरी मेमोरी यूनिट में जाएगा, फिर स्टोरेज यूनिट में जाएगा, फिर स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी यूनिट में जाएगा, फिर उसके बाद आउटपुट यूनिट में जाएगा। ठीक है, और जो कंट्रोल फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि इनपुट यूनिट में गया, कंट्रोल यूनिट में गया, देन कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट एक साइड से, और एक से एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट से निकल के डायरेक्ट आउटपुट यूनिट में गया। ठीक है, ये इसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कितने कंपोनेंट्स हमारे पास, एक तो इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू, और मेमोरी यूनिट। ठीक है, नोट सिस्टम यूनिट इज अ मेटल और प्लास्टिक case that holds all the physical parts of the computer. The components that process data are located in it. ठीक है, all types of computers follow the same basic logical structure and perform the following 5 basic operations for converting a raw input into information useful to their users. ठीक है, तो पहले क्या है, टेक इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम। फिर उसके बाद स्टोरेज डाटा, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन शो दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड इवन रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रोसेसिंग डाटा, फिर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, आउटपुट इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ producing useful information or results for the user, such as a printed report or visual display. Control the workflow. Control the workflow में क्या directs the manner and sequence in which all of the above operations are performed. ठीक है, पहला क्या है, input unit है. This unit contains device with the help of which we enter data into the computer. This unit create a link between the user and the computer. ठीक है, input devices translate the information into a form understandable by a computer. ठीक है, the computer accepts coded information through input unit by the user. ठीक है, this unit is used to give
required information to the computer, for example keyboard, mouse etc. ये सारे इनपुट यूनिट है जो कि कोडेड फॉर्म में जाते हैं कंप्यूटर को, जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर देता है। तो इनपुट यूनिट क्या होता है, एक लिंक होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। An input unit perform the following functions. It accepts the instruction and data from the user. It converts these instructions and data to computer acceptable format. It supplies the converted instructions and data to the computer system for further processing। ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होती है? The output unit consists of devices with the help of which we get the information from the computer. This unit is a link between the computer and the users। ठीक है। Output devices translate the computer's output into a form understandable by the users। ठीक है। This unit sends the process results to the user। It is mainly used to display the desired result to the user as per input instructions। ठीक है। For example, monitor, printer, plotter etc. The following functions are performed by an output unit। ठीक है। It accepts the results produced by the computer which are in coded form and hence cannot be easily understood by user. It converts these coded results to readable form which convenient to users. It produces the converted results to the user। ठीक है। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड क्या है? CPU हो गया, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा CPU। CPU is considered as the brain of computer। CPU को क्या कहता है? brain of computer। CPU perform all types of data processing operations, stores data, intermediate results and instructions program। It controls the operation of all parts of the computer। The CPU is fabricated as a single integrated circuit IC and is also known as the microprocessor। It consists a set of registers, arithmetic logic unit and control unit which together interpret and execute instructions in assembly language। ठीक है। तो ALP unit and control which together interpret and execute instruction in assembly language। ठीक है। The primary function of CPU are as follows। The CPU transfers instructions and input data from the main memory to registered। ठीक है। The CPU executes the instruction in the storage sequence। ठीक है। When necessary, CPU transfer output data from registers to main memory। A CPU controls all the internal and external devices and performs arithmetic and logical operations। ठीक है। CPU जो होता है कि वो all the internal और external devices को कंट्रोल करता है एंड परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, मेनली अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ही करता है। CPU itself has the following 3 सब सिस्टम। ठीक है। इसके 3 सब सिस्टम है। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है। ALU क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल CPU ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है। ALU क्या है? ये अपना फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है CPU का। ALU contains the electronic circuitry that executes all arithmetic and logical operations on the available data। ALU uses registers to hold the data that is being processed। ठीक है। Most ALUs can perform the following operations। Most ALU following operation perform करता है logical operation and not or XOR। ठीक है। Arithmetic operations, addition, subtraction, multiplications and division। ठीक है। bit shifting operations shifting or rotating a word by a specified number of bit and to the left or right or without sign extensions। ठीक है। Comparison operations greater than equals to smaller than equals to। This ALU unit consists of two subsections, namely arithmetic sections and logic section। ठीक है। Logic section क्या है? Functions of logic section is to perform logic operations such as comparing, selecting, matching and merging of data। Arithmetic sections
अरिथमेटिक सेक्शन क्या होता है? फंक्शंस ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. All complex operations are done by making repetitive use of the above operations. ठीक है, जो complex operations होते हैं ना, वो जो done by रिपीटेटिव यूज होता है सारे ये जो ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, रजिस्टर्स, these are used to quickly accept, store, transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU. ठीक है, these registers are the top of the memory hierarchy and are the fastest way for the system to manipulate data. The number and size of registers vary from processor to processor. ठीक है, memory or storage unit. This unit can store instructions, data, and intermediate results. This unit supplies information to other units of the computer when needed. ठीक है, it is also known as the internal storage unit or the main memory or the primary storage or random access memory. ठीक है, its size affects speed. ठीक है, इसकी साइज जो होती है वो स्पीड को अफेक्ट करती है. ठीक है, पावर एंड कैपेबिलिटी को अफेक्ट करती है. दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स और डाटा ऑन अ टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस. ठीक है, it has a main memory and secondary memory, auxiliary memory. ठीक है, the input data which is to be processed is brought into primary memory, main memory before processing. ठीक है, secondary memory is used to permanently store data, programs and output. ठीक है, this unit does not deal directly with the CPU. secondary memory CPU से directly deal नहीं करता है. और functions of the memory unit. functions क्या है memory unit के? It stores all the data and the instructions required for processing. It stores intermediate results of processing. It stores the final results of processing before these results are released to an output devices. All inputs and outputs are transmitted through the main memory. Control unit. Control unit क्या है? This units controls the operation of all parts of the computer but does not carry out any actual data processing operation. CU coordinates with the input and output devices of a computer. ठीक है, it directs the computer to carry out stored program instruction by communicating with the ALU and the registers. It organizes the processing of data and instructions. The basic functions of a control unit is to fetch the instructions stored in the main memory, identify the operations and the devices involved in it, and accordingly generate control signals. ठीक है, functions of these units are, functions क्या होता है? It is responsible for controlling the transfer of data and instruction among other units of a computer. It manages and coordinates all the units of the computer. It obtains the instructions from the memory, interprets them and directs the operation of the computer. ठीक है, it communicates with input output devices for transfer of data or results from storage. It does not process or store data. ठीक है, microprocessor. The CPU is fabricated as a single integrated circuit chip. This it is also known as the microprocessor. Multiprocessor computers uses two or more central processing units, CPUs, within a single computer system. ठीक है, it is a controlling element in a computer system and is sometimes referred to as a chip. ठीक है, microprocessor is the main hardware that drives the computer. ठीक है, it is a large printed circuit board, PCB board होता है, which is used in all electronic systems such as computer, calculator, digital system, etc. The speed of CPU depends upon the type of microprocessor used. ठीक है, Intel 4004 was the first microprocessor. ये पहला microprocessor था
जो कि made by Intel in 1971 by scientist Ted Hoff and engineer Federico Fagin. ठीक है. Some of the popular microprocessors are Intel Core i7, Intel Core i9, Dual Core Pentium 4, etc. Motherboard क्या होता है? Personal computer use a number of chips mounted on a main circuit board called the motherboard. ठीक है. मदरबोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड रहते हैं, उसी को मदरबोर्ड कहते हैं. द मदरबोर्ड इज द physical arrangement in a computer that contains the computer's basic circuitry and components. The main circuit board contained in any computer is called a motherboard. It is also known as the main board or logic board or system board or a planar board. It all the other electronic devices and circuits of a computer system are attached to this board, like ROM, RAM, expansion slots, PCI slots, and USB ports. It also includes controllers for devices like the hard drive, DVD drive, keyboard, and mouse components on motherboard. पहला क्या होता है? CMOS बैटरी, BIOS chip, fan, expansion slot, SMPS, PCI slot और processor chip और buses. ठीक है. Interconnection of units. ठीक है. CPU sends data, instructions and information to the components inside the computer as well as the peripheral devices attached to it. ठीक है. A bus is a set of wires uses for interconnections where each wire can carry one bit of data. ठीक है. In other words, bus is a set of electronic signal pathways that allows informations and signals to travel between components inside or outside of a computer. ठीक है. A computer bus can be divided of two types. ठीक है. computer bus जो है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है. ठीक है. पहला internal bus. The internal bus connects components inside the motherboard like CPU and system memory. It also called the system bus. Internal bus includes following buses. The command to access the memory or the input devices is carried by the control bus. ठीक है. The address of input devices or memory is carried by the address bus. The data to be transferred is carried by the data bus. ठीक है. External bus क्या होता है? It connects the different external devices, peripheral, expansion slots, input output ports, drive connections to the rest of the computer. It also referred to as the expansion bus. ठीक है. Instruction cycle. It represents the sequence of events that takes place as an instruction is read from a memory and executed. ठीक है. A simple instruction cycle consists of the following steps. ठीक है. इसके four steps हैं, जैसे कि fetching the instruction from the memory or decoding the instruction for operations, executing the instructions and storing the memory. In above steps 1, 2 instructions are same and known as the fetch cycle. पहला और दूसरे को क्या बोलते हैं? fetch cycle बोलते हैं. तीसरे और चौथे को are different and known as the execute cycle. तीसरे और चौथे को execute cycle बोलते हैं. UPS uninterruptible power supply. ठीक है. is an electric apparatus that provides emergency power to a load when the input power source or main power fails. ठीक है. Power strip. It is an electrical device that is used to expand the capacity of a wall outlet in terms of number of devices it can accommodate. Instruction code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific operations. ठीक है. Instruction executions. The program which is to be executed is a set of instruction which are stored in memory. ठीक है. memory में store किए रहते हैं set of instructions. The CPU executes the instructions, ठीक है, of a memory of a program to complete the task, and this execution takes place inside the CPU and with the help of registers ALU. ठीक है. arithmetic logic unit
and CU control unit. When the processor executes instruction, data is temporarily stored in a small local memory location and these are called the registers. ठीक है, तो रजिस्टर में ये डाटा रहते हैं और फिर उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेसिंग होते हैं. Accumulator register which stores the immediate results of arithmetic and logical operations. Memory address register MAR इसको बोलते हैं, which contains the address of a memory locations to which data is to be stored. Program counter, ठीक है, which contains the address of the next instruction to process. ठीक है, instruction register क्या होता है? which contains the current instruction being processed. Okay, so computer hardware and software, I think ये next topic है. I think so ये next topic है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स